Okay, so now moving on to moment of inertia. So, moment of inertia is basically the quantity which is expressed by the body resisting angular acceleration. और अगर इसको हमने कैलकुलेट करना हो तो इट विल बेसिकली बी द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ एवरी पार्टिकल विद इन इट्स स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. अगर हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इन टर्म्स ऑफ टॉर्क डिसाइड करना हो तो we can say कि it is basically a quantity that decides the amount of torque which is needed for a specific angular acceleration in a rotational axis. मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम एंगुलर मास भी कहते हैं और रोटेशनल इनर्शिया भी कहते हैं और इसके एसआई यूनिट्स आर केजी मीटर स्क्वायर. यूजुअली जब भी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिस्क्राइब करते हैं तो वी स्पेसिफाई इट विद रिस्पेक्ट टू अ चोजन एक्सिस ऑफ रोटेशन और जो इसकी वैल्यू होती है इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अराउंड दैट एक्सिस ऑफ रोटेशन. In general terms, the formula for moment of inertia is I is equals to mr square, जहाँ पे m is basically the sum of the product of the mass and r is the distance from the axis of the rotation. But for different objects, the formula will vary depending on the axis that is chosen. So for example, if we have a solid cylinder or a disk, उसका moment of inertia का formula will be I is equals to half mr square. और इफ़ वी हैव अ रॉड और हम उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो इसका फार्मूला विल बी 1/12 ml स्क्वायर. और इफ़ वी टेक आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर तो उसका फार्मूला विल बी I इज इक्वल्स टू 2/5 mr स्क्वायर. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली डिफरेंट चीज़ों पे डिपेंड करता है. फर्स्टली द डेंसिटी ऑफ द मटीरियल, सेकेंडली द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी एंड लास्टली द एक्सिस ऑफ रोटेशन, which can also be defined as the distribution of mass relative to the axis.